Hello, namaste and bonjour. Welcome back to my channel. Today, let me take you to one of the most beautiful towns of France, Annecy. So this is Annecy, the Venice of the Alps. Now this is known as the Venice of the Alps because of its beautiful canals. और जैसे ही यहाँ पे आओगे आपको दिखेंगे बहुत सुंदर पेस्टल कलर्ड बिल्डिंग्स, क्यूट कैफेज और बहुत ही प्यारे हिस्टोरिकल ब्रिजेस. So to reach Annecy, I took a Flixbus from Grenoble, which took around 2 hours and costed me €8 one side. And the journey from the bus was very smooth with very picturesque views. As you can see, it was surrounded by snowy Alps, beautiful mountains and definitely clean air. So let's go. I just arrived in Annecy and look at the view, the colorful buildings, the canals and the mountain view. Isn't it all magnifique? And this over here is the Palais de Lille, a historical castle in the middle of the canal, and it used to be a prison in the past times. And this landmark is one of the most photographed places in Annecy, and for the very right reasons, because यहाँ पे जो lighting है and साथ में जो water के कारण effect आता है, that makes your pictures so dreamy. And trust me, check my Instagram, I got some beautiful pictures over here. And here I am in the old town of Annecy, जिसकी जो streets हैं बिल्कुल ही fairy tale vibes वाली हैं. It looks like Beauty and the Beast के ना set के अंदर आ गए हो हम. This area dates back to the Middle Ages and is one of the most photogenic spots in France. And do you know what? Paris वगैरह तो हम सब चले जाते हैं जो movies में देखा होता है, पर इस तरह की जगहें जो movies में नहीं देखी होती हैं और first time देखते हैं, जो peaceful भी होती हैं और travel worthy भी होती है ना, they are what make your experience amazing and lovely. And now it's time to have food, जिसके लिए मैं जा रही हूँ Burger King, but वहाँ से I'm going to take my order और लेक साइड पे जाके अकेले पिकनिक करूँगी. And this is the beautiful lake of Annecy. Just look at it, water कितना ज़्यादा clear है and पीछे it's all mountains and those are the Alps जिस पे पूरी आपको snow भी दिख रही होगी. I think nature में ना सब कुछ यार बड़ा अच्छा सा लगता है. Just look at this. So this is Lake Annecy, one of the cleanest lakes in Europe. The water looks unreal. And do you know what? यहाँ पे you can also rent a boat and swim in summer or just enjoy the peaceful atmosphere and have food like me. So I thought कि इतनी अच्छी नेचर है तो कहीं पे भी बैठ के क्यों खाना खाना, तो इसलिए I thought कि खुद से एक पिकनिक करते हैं. खाना लेके आई हूँ, यहाँ पे बैठ के I'll have my food and I'll enjoy the view. मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें खिला सकती हूँ. It's chicken, bro. No, 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 no. Go, go. ना बच्चे वगैरह में ना बर्ड्स वगैरह को ये मतलब बर्गर टाइप्स वाली चीज़ जो खुद खा रहे खिलाए जा रहे हैं, पता है इट्स नॉट नाइस. दे हैव देयर ओन डाइजेस्टिव सिस्टम. आप कुछ भी नहीं खिला सकते हो. एंड द थिंग इज बच्चे हैं यार, मैं क्या ही बोलूँ. एंड पेरेंट्स पता नहीं क्यों समझाते थे, थिंक इट्स नाइस कि वी आर फीडिंग एनिमल्स, बट सबकी अपनी अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली डाइट होती है. यू कांट फीड देम वट एवर यू वॉन्ट टू, राइट. एंड दिस ओवर है इज पोंदा मोर, दैट इज़ द लवर्स ब्रिज. और मुझे लगता है जितने भी फ्रांस के लवर्स ब्रिज है ना, वहाँ पे मैं हमेशा अकेले ही आने वाली हूँ. हमेशा तो नहीं, बट इस पूरी वेकेशन में तो आई थिंक मैं अकेले रहने वाली. So now after having a picnic, बहुत सारा खाना खाने के बाद और पौंदा मोर दैट इज लवर्स ब्रिज पे अकेले की फोटोज कराने के बाद और ये फिर से रियलाइज करके कि I don't have a lover. Maybe I do have lovers, but
I don't love someone. So इसीलिए because of this thing, let's try to digest this by walking along the Lake Dancy. So अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में और इस बार मैंने किया ओबेश द शनिस which means youth hostels. So ये फीमेल रूम है जिसके अंदर 4 बेड्स हैं and लकीली अभी तक तो कोई नहीं आया. मेरा इतना मन है कि कोई ना आए क्योंकि मैंने लाइफ में कभी रूम शेयर नहीं किया है, बट ना मेरा मन था कि चलो एक बार ट्राई करते हैं ना. ऑल्सो यार कंपैरेटिवली ना इनका मतलब प्राइस भी बहुत कम रहता है. सो इस बार मैंने यूथ हॉस्टल ट्राई किया है. लेट्स सी हाउ द एक्सपीरियंस गोस. लेट मी गिव यू अ रूम टूर. And then my room is a 4-bed room for females, and luckily there is nobody who has yet entered, so maybe that I might be the only one. So yeah, this is the room. There are 4 beds. One charging point is here and the other one was at the entry. Now let me tell you, see, the light is not really working, but it's okay, no big deal. The heater is working perfectly fine. And then for the bathing area, this is the shower, and trust me, shower na बहुत weird है. Just see. Like, who the hell can say that this is a shower? So till now I can say that the room is fine. There is no issue with the room, but do you know what? That shower room is actually very funny. I don't know like how I'm gonna take a shower. But otherwise it's okay. Let's see, I'll talk to the reception if it's possible to change my room. Let's see and I'll tell you how it goes. यार so जो मेरा होटल है ना, जो ये हॉस्टल है, एक्चुअली आई डोंट हैव द हैबिट ऑफ सेइंग हॉस्टल, बट जो हॉस्टल है ना वहाँ से व्यू बहुत प्यारा है एंड दैट्स द एरिया वेयर आई विल बी हैविंग ब्रेकफास्ट टुमारो. सो जस्ट लुक एट द व्यू. And do you know what nonsense I did? So for tomorrow, I reserved my tickets for a chocolate factory in Switzerland. And I thought it's in Geneva. So I was just about to book the tickets. I just wanted to check the address to see that kitni dur hai wo bus stop se. And you know what? I realized it's not in Geneva, it's in Zurich, which is approximately 250 kilometers from here. So anyone who's planning to go to the Lindt chocolate factory, it's not in Geneva, it's in Zurich. I don't know which YouTuber told me that it's in Geneva. And this by far is the best ice cream I've ever had. मेरे को लगता था चंडीगढ़ में ना सॉफ्टी कॉर्नर की ice cream is the best, but no, this is the best. And do you know what? I think whenever I'm traveling, I end up doing a lot of cardio because I walk a lot while traveling. I have already completed 20,000 steps and it's just 6 p.m. So by the time I'll be back, I guess I'll be done with 35,000 steps. So I think I am somebody who should be traveling every single day, because if I'll do that, I'll end up getting a lot more fit, and that is something that I really require. So guys, that's it for today's video. Stay tuned and don't forget to subscribe to my channel. And yes, if you're visiting France, don't forget to visit this beautiful, lovely fairy tale city. Over. Bye-bye.